fake photos. One photo, one assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay, can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture in 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. Can someone come? Can two people come up to ask you a question? What, two journalists? Yeah. Are you? Come. Here's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए कम ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी. इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? Can you see something strange? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए. नहीं यहाँ से दिख जाएगा. अमरजीत कौर. मल्टीपल नेम्स. कहाँ है मल्टीपल नेम्स? हाँ. वेरी गुड. हाँ ठीक है. अच्छा थोड़ा आगे जाइए. तरविंदर सिंह 73 ईयर. फोटो है किसी बच्चे का. लाइए नीचे लाइए. हाँ क्या देखा? नहीं हाँ ये देखिए. अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह नाम, पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु 34 साल. ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी मैं आपको बता रही हूँ. औरत है, महिला है और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है. इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो. अच्छा ये 9 जगह आ रही है. 9 जगह. 9 प्लेसेस. अच्छा थोड़ा और दिखाओ. ये क्या है? ये 3 4 5 6 7 8 9 दफे फिर से आ गई. रणदीप सिंह. ये कभी 80 साल की है. 80 साल की है. रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी. मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है. नाम अलग है, एज अलग है, कभी आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है. और देखिए ये फिर से आती है. मल्टीपल है. ये फिर से आई. और जाइए ये फिर से आ गई है. ये फिर से आई. ये एक मिनट. ये गुरमेश सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स. हाँ. ओवर कर दिया. हाँ. और उस लड़के की उम्र 23. ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है. बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात और दिखाइए थोड़ा. शो मोर. कीप गोइंग. ज्यादातर उसी महिला की. Same woman is coming again and again. Right? 104 साल उम्र. 104 साल की हो गई. 75 साल. नहीं वो मकान है. मकान में. लेकिन इनकी हुई उम्र 75 साल तो नहीं है. अरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई दे. ठीक है. और नीचे जाइए. ये सब 104 में रह रहे हैं. आप देखिए ये सब 104 103 मकान में रह रहे हैं. नीचे जाइए और जाइए. तो अब मैं आपसे पूछता हूं किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ की लिस्ट है. She appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage.
Because multiple times the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes. Anybody can go and vote. Why are they doing it? Because they want to create space. And what is the proof they're doing it? They're destroying CCTV records. If we ask for CCTV records of this booth, we will know 100% what happened in this booth. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos, modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say, "Mera naam Durga hai," aane kar diya. Okay, go zoom out, please. So they're occurring in multiple booths. Just go back, please. Occurring in multiple booths. She's in booth number 20, the same photo, booth number 27, booth number 24, booth number 106. Meaning it's not being done at the booth level. It's being done above the booth level. And the same thing on this side. This is a system, a method. Let's discuss duplicates. They have duplicate photos. We have 223 photos in one booth. We have hundreds of photos in the same photo in an assembly. We have the same record appearing again and again and again and again. We have this gentleman in booth 431. He's voting 14 times. In booth 508, he's voting. In booth 431, he's voting. We have this other fellow, Rudra Abhishek Jain. He's voting in booth number 130. He's voting in 131. His brother also is voting. They have 18 votes. Now the Election Commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says, please identify same photograph. You don't even need AI for that. And you will know these are all the same photographs that we've got. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Why? Reason. They're helping the BJP. Here's the most interesting one. And this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. Okay? These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. All of them. Right? So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. Now this is absolute crystal clear proof of what the BJP is doing. Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting in Uttar Pradesh and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son. Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here, it's become Balakrishna.
Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these. Where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity because they belong to, are associated with the BJP, where they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the Vyavastha that man was talking about. Right? Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. He's saying it. He knows it. And we proved it. Do you have any doubts? അതിനകത്ത് Now listen to this. The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं. कई लोगों के पास घर नहीं होता, Nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. Look at the Sardar ji. He's looking like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है. कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे. पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों के Here's house number 0. That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0? We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is the method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake. This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they're not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man.
right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. Was ground verification done of this, that there are 108 people living here and they don't exist? Was ground verification done of this BJP leader? 66 voters, he is saying they're living there. They don't live there. Was it done in these 500 cases? No. Otherwise, they wouldn't be on the list. And then we don't have access to the forms, as I said in the beginning, but we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूँ और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट ली गई है। जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूँ जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। नाम सन्नू सिंह लखीराम, गाँव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूँ। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। All targeted. And these are 4 we've shown you. मेरा नाम Sorry. We have huge numbers of these people. So here is the Vyavastha the gentleman was talking about. The Brazilian model to create space, put her name, allow anybody to vote. The BJP leaders and BJP people who get the option of voting in Uttar Pradesh and Haryana, the blurred photographs, the deleted voters, and the house number 0. What's the big picture? The big picture is 22,000 votes was the margin. 25 lakhs was this. So you can understand that there was no election in Haryana. There was a theft in Haryana. And it's very clear who is responsible for the theft. These gentlemen colluded with the BJP to ensure that the Congress could not win the election in Haryana. The Election Commission is in partnership with the Prime Minister and the Home Minister, and they have destroyed the democratic foundations of this country. There is absolutely nothing in this presentation that has not been backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records,
is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized. And it can be used in any state. And it is going to be used in Haryana. And I'm confident that after the Haryana elections, we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might, in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the elections. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP, and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. Yeah, we have some examples from Bihar, where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. बताइए जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक है। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए हैं बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा करके हमारे गांव के शिक्षक ही है, वही बीओ वाले जो है वही पढ़ाते हैं, उनसे जा करके सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, केवल इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ है, क्योंकि हम विकलांग है, कहीं आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो सर। ये हमारे जी। मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर ले। मेरे नाम में वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुड़ेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। So this is the state of Indian democracy. Thank you, sir. Thank you, ji. Thank you. Thank you. धन्यवाद। You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth.
right? Brazilian model is on the voter list of Bihar. Sorry, हरियाणा, right? हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की. So this is the truth. Do you have any questions? Hindi? So in the last press conference, you said, okay, so what do you do if the democratic structure is not working? What do you do? And what we are doing is making it absolutely crystal clear to the people of India what has happened. We are informing the people of India that the Prime Minister, that the Home Minister are not legitimately in government. That the Chief Minister of Haryana is not legitimately in government. That government has been stolen. It is the same with the government of Maharashtra. Right? So, what is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy with Satya and Ahimsa. Peacefully, but by expressing their desire for a democratic India, by fighting for a democratic India, and by resisting this wholesale theft and murder of the Constitution and democracy. Hindi? नमस्कार, मैं हिंदी में भी कर देता हूं. महादेवपुरा के बाद, अलंध के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है. तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है. हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है. ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं. एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है. ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो. दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे. कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है. हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए. थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं. इनकी आवाज सुनिए. ये मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है. हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए. अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं. सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो. ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है. कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है, आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है. मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है. कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी.
8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी, मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है,